what we are gonna talk about is basically कि why I'm not making videos for like a month now is because first of all तो यार हम लोग बाहर गए थे, ठीक है. And the second reason is कि मुझे topics नहीं मिल रहे to talk about on the channel. And I am in kind of a dilemma कि क्या टॉपिक्स के बारे में हम वीडियोस बना सकते हैं ऑन द चैनल, राइट. सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल आई वाज लाइक कि मैं जो डेटा साइंस के बारे में पढ़ रहा हूँ या मैं जो प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ इन दिस 4 years ऑफ कॉलेज लाइफ उसको मैं डॉक्यूमेंट करूँगा एंड आई पोस्ट दिस इन एन रॉ एडिटेड फॉर्मेट इन द चैनल. द पॉइंट इज़ कि डेटा साइंस में पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है. सो आई एम नॉट हैविंग एनी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस. तो जो डेमो प्रोजेक्ट्स मैं बनाऊँगा, राइट, तो उसमें टाइम लगता है. एट द सेम टाइम मुझे अभी इंटर्नशिप भी ऑफ़र हुई, तो उसमें सीन पता है कैसा होगा कि मेरा जो लर्निंग है वो थोड़ा ब्रेकिंग है. एंड अगर हम लोग खाली डेटा साइंस के रिलेटेड ही वीडियोस बनाएंगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम टू पोस्ट कंसिस्टेंटली ऑन द चैनल. नाउ दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विच आई फील कि मेरे लिए इतना बड़ा है, बिकॉज अगेन वॉट आई एम डूइंग ऑन द चैनल इज़ पैशन बेस्ड ओनली, ठीक है. सो कि अगर 3 महीने के बाद भी वीडियो आ रही देन आई एम नॉट दैट मच अफेक्टेड, प्रोवाइडेड मैं जो कंटेंट डाल रहा हूँ दैट इज़ नॉट AI जनरेटेड, दैट्स नॉट स्क्रिप्टेड इन अ वे, लाइक वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट नहीं हुआ है. लाइक इट शुड बी लाइक कि मैं मेरी लाइफ को सिर्फ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ एंड इट शुड एंड एट दैट. ऑफ कोर्स वील इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वीडियोस एज वी गो अहेड, बट येस लुकिंग इन अ वे दैट वी आर नॉट viewing this in a commercial aspect, तो इट्स ओके अगर हम कोई बेंचमार्क रीच नहीं कर रहे. तो यू गेटिंग मी. या सो वही था द रीज़न वाई आई एम नॉट पोस्टिंग कंसिस्टेंटली. लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, ठीक है. मैंने ऐसे लिख के रखा है इसके अंदर, ठीक है. So the first point is why you should start content creation. Second is making videos based on your life, and so okay, cut this out. Okay. So the first point which we are gonna talk about is ki why do we need to start content creation and what to actually make videos about, right? So you might have seen a lot of videos on YouTube or on Instagram कि just document whatever you're doing, right, and post about it. The point is that a lot of people don't have such a niche or an hobby which they have been following or practicing for a long period of time, which is the reason they don't know what to post or what to record on YouTube, right? The point which I like to tell you right now is कि the problem is not about content creation anymore. It's about कि आपको अपना जो हॉबी है यू डोंट नो दैट वेल इनफ. फॉर दैट आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका जो काम है, उसमें से आपको टाइम निकाल के यू हैव टू चूज़ और ट्राई डिफरेंट हॉबीज़ जो आपको एन्जॉय आप करते थे पहले या आपके लिए नए हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट है. फोकस ऑन दिस हॉबीज़, ठीक है. इवन इफ़ यू आर नॉट मेकिंग कॉन्टेंट ऑन देम दैट्स ओके, बिकॉज दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम कि आपके हॉबीज़ नहीं है, राइट. विच मीन्स कि यू आर नॉट providing yourself with time to actually engage in something which you will enjoy. Okay, what you are enjoying right now is कि reels देखना या watching videos on YouTube, right? Long form content, short form content. But the point is that you are just consuming passive content, which is not technically a hobby, right? So like movie watching is a hobby in a way, बट देन अगेन उसमें भी नीश हो गया है कि मतलब मैं मूवीज़ देखता हूँ बट मैं इतने मूवीज़ नहीं देखता कि मैं आई बी एबल टू टॉक अबाउट इट ऑन यूट्यूब चैनल. सो उसको आपने उस हॉबी को उतना आपने पाला नहीं है. या फिर अगर आपको ड्राइंग की अच्छी हॉबी है, राइट, बट आपको लगता है कि मैं उतने अच्छे ड्राइंग नहीं कर पाता कि मैं चैनल पे डालूँ. तो पॉइंट इज़ कि आपने ड्राइंग एज अ हॉबी को उतना परसू किया नहीं है. दैट्स द प्रॉब्लम, नॉट कि आपको ड्राइंग अच्छे से आती नहीं है. बिकॉज अगेन पोस्टिंग हॉबी ऑन द चैनल इट हैज़ नथिंग टू डू विथ हाउ गुड यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. ओके, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट.
सो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये मेन चीज़ है. सो द फर्स्ट थिंग, जब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन दिस चैनल, तो मुझे पर्सनली लगा कि दिस इज़ माई हॉबी, राइट. लाइक बहुत कम लोगों का है ये, बट आई हैव बीन स्टडिंग यूट्यूब फ्रॉम लाइक 9th and 10th, कि लाइक एवरीथिंग अबाउट हाउ एल्गोरिथम्स वर्क, हाउ पीपल साइकोलॉजी वर्क्स, राइट, एंड एवरीथिंग, कि हाउ टू मेक अ वीडियो लाइक दैट. द पॉइंट इज़ कि मेरी हॉबी ही यूट्यूब थी. लाइक वट एवर आई एम गोना डू इट ऑन यूट्यूब. ये था मेरा प्लान. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव दोज प्लान्स, बट येस, आई एम वन ऑफ देम, एंड इफ यू आर ऑल्सो, देन वी आर अ पार्ट ऑफ अ niche बेसिकली. सो what I'm trying to tell you is कि मेरा हॉबी ही यूट्यूब था, एंड नाउ आई एम परस्यूइंग माई हॉबी, एंड basically I don't have to do anything else because my hobby is making content and posting on YouTube, right? So whatever I do, and as long as I'm recording it and I'm posting it on YouTube, I am basically practicing my hobby, if you're getting me. Now, how to do it? Okay, there are two ways to do it. One is the authentic way, which I like. Second is a not so authentic way, which I have done, but I don't personally recommend you doing that. There are reasons. So the first point, which is the authentic way of doing it, is key. See, if you're still watching this video, I'm assuming you're not looking at content creation from just a commercial perspective. Ki I am getting into this only because I'll earn money out of it. If that's your goal, this video is not for you, because I personally haven't started content creation so that I'll earn money. Okay. So the first way, the authentic way, is to just get a pen and a paper and write things down. Whatever thoughts you get in mind, the first thought, right? What I personally like to do is कि ऊपर का छोड़ दो, बट इफ़ यू कैन सी, तो ऐसा इन अ वे एक माइंड मैप जैसा मैंने बनाया, एंड उसको मैंने एरोज से कनेक्ट किया बेसिकली, कि मैं इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, एंड देन आई विल गो टू दिस टॉपिक. इफ़ देर आर टू पाथवेज, जस्ट मेक सिंपली टू एरोज, ए बी. जैसे कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू कि देर आर टू वेज टू मेक अ वीडियो, ऑथेंटिक एंड नॉन ऑथेंटिक, मैंने आपको दोनों एरोज के बारे में पहले ब्रीफ किया कि व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट, राइट. इट्स लाइक दैट. इससे दो चीज़ें होगी. पहली बात तो आपका जो वीडियो है वो स्ट्रक्चर हो जाएगा. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी वो वीडियो ऑथेंटिक है. कहने का मतलब है कि ओके, दिस इज़ द राइट वे टू ट्रांजेक्शन इनटू नॉन ऑथेंटिक पार्ट, विच मीन्स कि लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट उठाएंगे. एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ कि मैंने ये किया नहीं है या मैं बहुत महान हो गया, बिकॉज आई हैव डन इट ऑन द चैनल 2 times. जो मेरा फर्स्ट वीडियो आया था कि एक्सपीरियंस अबाउट द फर्स्ट ईयर, उसके बाद मैंने 2 वीडियोज़ डाले. द 2 वीडियोज़ आर लाइक कि आई थिंक एक एनाकोंडा पे था और एक दूसरा था कि IDEs पे, लाइक राइट, कोडिंग एनवायरनमेंट्स के ऊपर मैंने बनाया था. एंड द टेक अवे फ्रॉम इट वॉज कि आपको एनवायरनमेंट इतना मैटर नहीं करता एज लॉन्ग एज you are practicing coding, because coding is more important, or coding is more important than choosing a language and the virtual environment, right? Sorry, the coding environment. So what I'm trying to tell you is कि chat gpt मत करो if you are not looking at this from a commercial aspect, because I have seen well edited, planned out videos which are doing great, by the way, but the content is too generic. जो आपको चैट जीपीटी पे भी, if you are asking that same exact question, आपको वही content मिलेगा, and वही content 10 अलग अलग channels पे मिल रहा है. So you are making generic content, and the only way people are hooked to you is maybe because you were making authentic content at some point of time in your life, and the way of you presenting that video or the way you are connecting to the audience is the reason. Because at the end of the day आप value तो 10 अलग channels के जैसे ही दे रहे हो, then what is the whole and sole reason कि मैं आपको देखूँ. So people are finding different ways why people will stay on the video, which is कि आपने editing style थोड़ी सी engaging बना दी, you are up to date with all the latest editing styles. अभी नया एक minimal editing style का आया है कि just like good fonts, a minimal music, like not too much Mr. Beast style editing of videos. That's in trend right now. So you'll provide everything which is according to the trend. You'll talk on trendy topics, and everything which you talk about is ChatGPT generated, and some bit of your experience, so that it doesn't feel too much ChatGPT generated.
ओके मैं मेरे थॉट्स बस ऐसे बोल रहा हूँ. इफ़ दिस मेक्स सेंस टू यू दैट्स अमेजिंग. ठीक है, बिकॉज आई नो आपने एफर्ट डाला है टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट. सो दैट्स अबाउट द प्रेप पार्ट. ऑथेंटिकेट का मैंने ऑथेंटिकेशन, सॉरी माय बैड, ऑथेंटिक कंटेंट का मैंने आपको बता दिया कि सिंपल पेपर पेन टॉकिंग हेड वीडियो ऑफ मी. ठीक है, इफ़ आई एम पुटिंग आउट अ ट्यूटोरियल दैट्स 90% of the time useless because you will find the tutorial somewhere else. What people want from me is my unbiased opinion about a tool or a product or whatever decisions I'm taking, right? And this is not just a content for you guys but also for the future me who is like 20 years 30 years older than me right now, who is just watching this video on YouTube, and hopefully I'll not delete this video by then. Okay, so now that you have decided that you'll make content, right, and that just a second, now that you have decided that you'll make content, let's talk about कि prep कैसे करना है, right. सो लाइक आपके कुछ भी एक्सक्यूजेज है, राइट, कि मेरे को कंटेंट बनाना है बट एवरीथिंग आगे के बट के इज़ टू जस्ट, वही क्या आंसर है मेरा, जस्ट मेक थिंग्स वर्क ब्रो, बिकॉज आई टेल यू दिस इज़ वर्थ इट. इवन तो अभी मेरे चैनल पे एट दिस पॉइंट 0 सब्सक्राइबर्स है, लाइक लिटरली 0 सब्सक्राइबर्स, एंड द ओनली व्यूअर्स आई एम गेटिंग राइट नाउ इज़ जस्ट मी और मे बी माई पेरेंट्स. वो देखते हैं, आई डोंट नो, आई हैवंट इवन टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट दिस चैनल. But the whole point of this is कि even though I am not getting anything from this, it's good to make content for me, like at least for me it's good. But I'll advise you कि एक बार तो try करो. If you don't like to make the first 10 videos, quit it. ठीक है, that's not for you then, and that's totally understandable. You will make like celebrate करोगे आप बाहर लाइफ में, no issues. सो एक्सक्यूजेज निकाल दो. एंड इफ़ यू आर लाइक ऐसे एक्सक्यूजेज है कि यार लाइट नहीं है, ट्राईपॉड नहीं है, कैमरा नहीं है, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन माई लैपटॉप्स कैमरा बेसिकली, राइट. सो स्टार्ट विद द बेयर मिनिमम. पीपल केयर अबाउट योर कॉन्टेंट. तो कल को अगर आपका 720p का वीडियो नहीं हो कि 480p का वीडियो है, बट यू आर प्रोवाइडिंग दैट मच लेवल ऑफ वैल्यू टू योर कॉन्टेंट, पीपल विल स्टिल वॉच योर कॉन्टेंट ब्रो, डोंट वरी अबाउट इट. ओके देन अगेन दैट इफ़ यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू, उसके बारे में हमने बात कर ली कि आपको हॉबीज़ के ऊपर यू कैन मेक वीडियोस. इफ़ यू डोंट हैव हॉबीज़, यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट योर हॉबीज़. फॉर दैट यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम द लैपटॉप, अवे फ्रॉम ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, एंड जस्ट you know give your time to explore things out, right. Even if you don't end up making content on it, you'll still enjoy the process. That's the whole point of this, okay. All right. And at some point when you get कि थोड़ा सा आगे पहुँच गए, you can just analyze what people like to watch and based on it अपने वीडियोस को थोड़ा सा टारगेट करो, राइट. द गोल मेन हियर यहाँ पर जो है वो मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा बताऊँगा कि इज़ टू मेक टाइमलेस वीडियोस. कहने का मतलब है कि मैं आज कोई बात कह रहा हूँ which is not related to the latest trends or the tools, which is timeless. It should stay timeless. It shouldn't be um, in a way be biased about the trends going on. Ki, for example, if I were to make a political statement on this channel, which I'll not definitely, then that statement shouldn't be affected by any trends going outside. जो भी चल रहा है अभी, कौन पावर में है कौन नहीं है, या इसका क्या आउटपुट होगा. इट शुड बी अ प्योर ओपिनियटेड मैटर, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई not make videos about the trends going on, right. I'll try to make timeless videos. That's the whole point, because those are very great videos. As I told you, randomly write things down, because I'll tell you my own experience कि मैं महीनों से लिंक्डइन के पोस्ट जनरेट करवाते आ रहा हूँ चैट जीपीटी से, एंड आई कैन नॉट से कि यार एक सिंगल पोस्ट आई कैन नॉट पॉइंट आउट एंड से कि यार इस पोस्ट से मैं 100% खुश हूँ कि चैट जीपीटी ने मेरे को इतना अच्छे से करके दिया. व्हेन आई एम हैप्पी, व्हेन पीपल लाइक इट, और उस पर रिएक्शंस आते हैं, उस पर लोग बात करते हैं,
कि मानस इट्स अ वेरी गुड पोस्ट, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव, ब्ला ब्ला ब्ला, देन आई गेट टू अंडरस्टैंड कि यार हाँ कितना अच्छा पोस्ट है. बट द पॉइंट of me writing the post is key, because I have been passionate about reading books, writing something, poems or stories, और शायरी थोड़ा बहुत कभी कभी लिख लेता हूँ. तो द पॉइंट ऑफ ऑथेंटिसिटी इन द कंटेंट इज समथिंग विच आई केयर अबाउट अ लॉट. सो व्हेनेवर आई सी कि यार आप ऑटोमेशन से वीडियोस बना रहे हो, आप स्क्रिप्ट्स लिख के जनरेट कर रहे हो, आई हैव डन इट पर्सनली, बिकॉज अगेन वो कहीं ना कहीं आपके भूत घुसेगा दिमाग में कि यार लेट्स मेक दिस टोटली कमर्शियल, राइट, बिकॉज इट्स ईजी. चैट जीपीटी से आपने 10 कॉलम्स 10 रोज़ जनरेट कर दिए, 10 वीडियोज़ आइडियाज़, उसकी स्क्रिप्ट्स वगैरह है, वो पीडीएफ बना के आएगा अपने आप. That's easy to do. I'm a CS student. I've used N8 and I know how to do all of these things. I know how to automate and everything. But the point of making content is to put my authenticity somewhere where, like, I'm honest, right? I'm totally honest when I'm making these videos, because even if no one watches these videos in the future, at least I'll get back to them, and that is for sure. उसके लिए मैं GPT content नहीं डाल सकता इस पे. That's the whole point. Based on it, make videos, edit minimally, definitely don't spend too much time on editing until and unless editing is your hobby. Again, you'll get to post videos as well as edit content. So like आप हॉबी, मेरे जैसे हो गया, आप हॉबी या आपको एक पैशन बना रहे हो, आप उसको टाइम दे रहे हो, उसको परस्यू कर रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो पोस्टिंग वीडियोज, सो दैट विल कॉम्प्लीमेंट. Post and then totally forget about it, like just move on to the next video, right? The truth about timeless videos is that one timeless video has nothing to do with the other timeless video, right? अगर मैंने डेटा साइंस पढ़ाने का एक सीरीज़ बना दिया और उसके अंदर एक ML का सीरीज़ है, और आप कोई भी एक बीच में से वीडियो उठा के देखोगे ML का टॉपिक, देन इट विल मेक नो सेंस. मोस्ट प्रोबेबली मैंने ML अभी तक सीखा नहीं है, बट प्रॉब्ली दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? ठीक है, आई पुट योर नमपाई का एग्जाम्पल. ठीक है, नमपाई की सीरीज़ है, नमपाई में से मैं किसी भी एक वीडियो को उठा के एक टॉपिक को पढ़ना शुरू कर जाऊँ विदाउट नोइंग द बेसिक, विदाउट नोइंग पाइथन, इट विल मेक नो सेंस टू मी, राइट? इट्स सिंपली लाइक दैट. जो टाइमलेस वीडियोज़ है, दोज आर सपोज्ड टू मेक सेंस इवन व्हेन यू डोंट नो इसके पहले का वीडियो क्या था, इसके बाद का वीडियो क्या था. दैट्स द पॉइंट. Forget about it, then get ahead in life, make the next video. ठीक है, now that's how the whole process should be. That's how less fatigueful it should be. It should feel simple. It should be the last thing which you might do in your day. At the end of your day, you're coming, you're sitting, you're recording videos, you are spending 10 minutes, 20 minutes, maybe 30 minutes, or max to max 1 hour editing that video and posting it online, right? That's how it should be, because this is a side hustle, and as I'm doing it, I'm pursuing what I want side by side according to what needs to be done, right? So I'm pursuing what I want as a side hustle, and I'm giving it less priority than what needs to be done in life. That's how it should be. कि पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, जॉब लेना अभी नहीं है, इंटर्नशिप लेना इम्पॉर्टेंट है फॉर एक्सपीरियंस डेफिनेटली. सो व्हाट्स इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट आई वांट टू डू, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों का अलग इम्पॉर्टेंस है. व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज टू परस्यू बोथ ऑफ देम. डोंट डू ओनली वन थिंग, बिकॉज एक अभी इफ़ यू डोंट डू द हॉबी यू विल नॉट एन्जॉय लाइफ दैट मच. बट इफ़ यू डू द हॉबी ओनली, देन आई एम नॉट श्योर, but if God blesses you, you'll earn more. If not, then you'll get harsh truths to be heard from your family. I don't know. Okay. How when I plan these videos, I'm feeling the next book. लिखा है. Okay. Yeah, so 2 points which I wanted to tell you. ठीक है, 3 points actually. First is कि जिसमें आपने बात की is to avoid just trendy videos, like not just only I'm talking about the trends. It shouldn't be like that. You should be making some timeless videos as well, which applies to almost everything.
इन लाइफ. जैसे कि मैंने अभी ये वीडियो बनाया, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट पोस्टिंग ऑन यूट्यूब, इट्स ऑल्सो अबाउट someone who wants to pursue his own hobby, right? First point is to, if you can avoid trends, there are other ways to make videos on trends as well, but I am not at that topic कि मैं data science के best tools के ऊपर videos बनाऊंगा, because I don't know how to do basic data science also, right? Data cleaning and everything. Then when I planned this video, I'm feeling the most creative in months, exactly, because as I said, LinkedIn wala example ki I'm putting everything from ChatGPT. There are some posts which are creative, some are not, right? But this exact video which I'm talking to you right now feels एक effort डाला है इसमें, something which I am pursuing creatively, something which I was dreaming of doing 4 years back, 5 years back, 6 years back, right? Last point, most important point: don't make content for a niche audience. You are the niche. Let your audience find you. Pretty self-explanatory, right? And something which people make a video on, ऐसा topic है. I'll leave you at this point. Video को बंद करो. Think about this for 5 minutes at least, right? Decide what you want to do and get it done, bro. Like, simply, I'll tell you, on this side it's like बहुत अच्छा experience है. Even if I get 0 subscribers for the next 6 months, I'll still be doing this, and that's a promise. Manoj Jangi signing off. Peace.